Now we'll start off with your part 2 of 3D, which is the photoelectric effect. फोटो का मतलब लाइट और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब लाइट से एक्साइट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. If ultraviolet light is shone onto a negatively charged zinc plate, the plate loses its charge, and the explanation for this is that the light causes the electrons to leave the metal, removing the negative charge, and the electrons that are released are known as photoelectron. आपके पास एक जिंक प्लेट थी, आपने उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लेयर हटाई, इतनी एक्साइट की कि जो पार्टिकल्स कुछ जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर थे दे गॉट एक्साइटेड एंड दे लेफ्ट द मेटल सरफेस, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा यूवी लाइट उनके ऊपर शाइन की थी. वी कॉल दिस द photoelectric effect, and these electrons are known as the photoelectron because they actually were removed due to the UV light. However, variations on this experiment produce some surprising observations as well, that there is a certain minimum amount of energy that an electron needs in order to escape the surface of the metal. This energy is called as work function. अब work function क्या है? Work function is the minimum amount of energy that is needed to escape the electron from the surface of the metal. The wave theory of light would allow some of the wave energy to be passed to the electrons to enable them to gain the work function and escape. In the wave theory, the energy carried by a wave depends on its amplitude, which for light means its brightness. So the wave theory could predict that any color of the light, if made sufficiently bright, should enable the release of photoelectron. कोई भी लाइट को अगर आप इतना significantly bright करते हो और shine करते हो, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी. ऑल्टरनेटिवली अगर वेव एक स्मॉलर एम्पलीट्यूड की हो और अगर वो देर तक शाइन करते रहे तो स्लोली, तो बात तो वही होगी कि आप या तो ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली वेव थोड़ी देर के लिए शाइन करो, या आप एक कम एम्पलीट्यूड वाली वेव ज्यादा देर के लिए शाइन करोगे. दे आर बोथ गोइंग टू एक्चुअली रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाउएवर, दिस इज नॉट व्हाट इज ऑब्जर्व, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए यू हैव टू रीच द वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या है? अगेन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल फाइव. वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए है. तो एक थ्रेशोल्ड है बेसिकली. It's a threshold level, exactly. However, this is सही. not what is observed. The same negatively charged zinc plate cannot be discharged by red light, no matter how bright or how long the illumination. अब ये तो बात ही गलत होगी. आपने तो कहा था कि आप कोई भी वेव लाइट शाइन कर दो, लेकिन रेड लाइट से कुछ नहीं हुआ. No photoelectrons were emitted under the red light, and there is a maximum wavelength for the light, above which no photoelectrons are ever emitted. This can be thought कि यार एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी चाहिए आपको. ये नहीं कि रेड वेव मारो तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, आप फ्रीक्वेंसी भूल गए. याद रखो कि रेड वेव हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, बट द शॉर्टेस्ट and the smallest frequency. The explanation for these experimental observations can be summarized as that: number one, light travels as photons with a photon's energy proportional to the frequency. And when a photon encounters an electron, it transfers all of the energy to the electron. अब समझ ये आई, ये मेटल प्लेट है, ठीक है. ये जो लाइट शाइन हुई थी, यूवी लाइट, ये लाइट क्या थी? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, द फोटॉन्स. और इन फोटॉन्स की अपनी कोई एनर्जी थी. जब ये फोटॉन्स यहाँ पे सरफेस के ऊपर आए, दे ट्रांसफर देयर एनर्जी ई इनटू द वर्क फंक्शन टू रीच दैट पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. वो सारी एनर्जी जो एक फोटोन की थी, वो आपने वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड रीच करके फिर इनको एक्साइट किया. इफ एन इलेक्ट्रॉन गेन सफिशिएंट एनर्जी more than the work function, it can escape the surface of the metal as a photoelectron. Brighter illumination means that more photons per second, which will mean a greater number of photoelectrons emitted per second. But if an electron does not gain sufficient energy from an encounter with a photon to escape the metal surface, it will transfer the energy gained from the photon to the metal as a whole before it can interact with another photon. Thus, if the photon energy is too low, no photoelectrons will be observed. तो असल में हो क्या रहा है? यूवी रेज है, इसके अंदर पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, फोटोन. फोटोन अपनी एनर्जी सारी ट्रांसफर कर रहा है इन ऑर्डर टू ओवरकम द वर्क फंक्शन. जैसे ही वर्क फंक्शन से ग्रेटर हो गई हमारी एनर्जी, इसको क्रॉस कर गया इस थ्रेशोल्ड को, इलेक्ट्रॉन एक फोटो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा एंड इट्स गोइंग टू लीव द सरफेस. That is where the Einstein developed an equation to explain the photoelectric effect, which is based on the conservation of energy. कि कोई एनर्जी is neither gained nor lost. फर्क ये कि जो आपको उस फोटोन की एनर्जी थी, that is transferred into the work function, that is transferred to the electron basically. All energy तो was सारा कोई create उसका सारा वो इधर ही जा रहा है. exactly.
जो एनर्जी फोटोन की थी वो सारी वर्क फंक्शन में बदल गई। सो ड्यूरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं? एच एफ। Energy of a photon is transferred to an electron, and to escape a metal surface, an electron requires at least an amount of energy equal to the work function. It may also lose energy before escaping the metal due to other physical processes, and only the remaining energy will be available for the electron emission kinetic energy to be emitted from the surface. Therefore, the kinetic energy भी तो चाहिए ना, क्योंकि वो मोशन में है, वो चीज हिल रहा है, हिलता हुआ बाहर जाएगा, चलना नहीं है उसने। That the electron can have on emission from the metal surface is less than or equal to the difference between the photon energy and work function. जो photon energy थी, let's say वो 100 थी, वो सारी आपको ट्रांसफर होगी इक्वल, एटलीस्ट लेट्स से इक्वल टू द वर्क फंक्शन। पीछे रह गया आपको 5 which was used in kinetic energy in order to release the particles. तो यहाँ पे I can say that half mv square kinetic energy is equal to what? Photon energy minus the work function। कि हमने जो फोटोन की एनर्जी में से जो हमने वर्क फंक्शन निकाल दिया, फोटोन की टोटल एनर्जी थी 100, 95 ट्रांसफर हो गई थी in order to release an electron, in order to reach the maximum work function, जो कि 35 था। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू द इलेक्ट्रॉन्स। रह गई पीछे 5। ओके। 100 माइनस 95 किया तो आपके पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। तो मैं कह सकता हूँ ना कि तो लेट्स से काइनेटिक। 120 है इसके पास, ठीक तो है। 95 वो ही जाएगा, तो वो 25 बनेगा अब वो तो काइनेटिक क्वेश्चन पे एनर्जी। डिपेंड करता है, और लेट्स से उधर इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन कुछ भी दिया, लेट्स से 110 है, तो 120 माइनस हम्म। 110 करोगे तो 10 आपके पास काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। लेकिन इस इंस्टेंट पे वो 95 ले लेते हैं, तो 120 माइनस 95 बनेगा एग्जैक्टली। 25, तो बिल्कुल, ज्यादा ये 25 फोटॉन काइनेटिक एनर्जी, हाँ और बिल्कुल। ज्यादा जाएगा यप। दूर। सो काइनेटिक एनर्जी इज ओके। इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है एच एफ माइनस द वर्क फंक्शन। तो अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करो तो एच एफ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी भी बन जाता है। इफ स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, the photon energy transferred to the electron is used partly to escape the metal surface and partly for its kinetic energy on leaving the metal. So a rearrangement of the equation is shown over here. Question है कि work function find करो of potassium. If green light with a wavelength of ये shining on produces photoelectron that have a minimum kinetic energy of ये। चलो जी, निकालना क्या है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट? एच एफ माइनस काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट? तो वर्क जी। फंक्शन, अब एच तो हमारे पास होता है, क्या होता है? 6.63 इंटू टेन टू पावर इंटू 10 माइनस माइनस 34। 34, मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो वेवलेंथ गिवन है, और ग्रीन लाइट की आपको स्पीड भी पता है। ठीक है, तो आप एफ की जगह लिख दो सी ओवर लेमडा माइनस द काइनेटिक एनर्जी। समझ आई? तो सिक्स पॉइंट जी। सिक्स थ्री इंटू टेन पावर माइनस 34 multiplied by 3 into 10 to power 8 divided by the wavelength which is 510 नैनोमीटर है, तो 10 to power माइनस 9 है। माइक्रो होता तो माइनस 6, और इस पूरे में माइनस से 6 माइनस बिल्कुल। कर दो काइनेटिक एनर्जी विच वाज 0.14। तो हमने सी ओवर लेमडा, क्योंकि सही है। ओके। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी भी आपको 0.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, मतलब कि 0.14 मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19, ये होता है 1 ईवी। तो 0.14 ईवी का मतलब क्या है? 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट? ओके। तो इस पूरे में से आपने क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। तो यू विल हैव योर वर्क फंक्शन। एक दफा इस क्वेश्चन को दोबारा देखो एंड लेट मी नो अगर समझ आ गई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल टू फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को सब्जेक्ट बनाया तो क्या फॉर्मूला बना? फोटोन एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब पहले काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट तो कर लो जूल्स में। 0.14 ईवी का क्या मतलब है? 0.14 इंटू 1.6 इंटू टेन माइनस 19, ये क्या आ गई?
काइनेटिक एनर्जी। अब आपको फोटोन एनर्जी निकालनी, एच एफ तो है नहीं, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, एच सी ओवर लेमडा। ठीक है, ये एच है इंटू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ये आ गया आपके पास फोटोन एनर्जी। सिंपल है। अब ये फोटोन एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी कर दो, तो आपके पास वर्क फंक्शन आ जाएगा। क्लियर है? जी। We could also use the photoelectric effect equation to measure the Planck's constant and the work function for a metal. In a vacuum, we place the metal as the anode in a cell that has a gap to the cathode, and when we shine light of a known frequency onto the anode, photoelectrons will be emitted, and in the current registered on the ammeter if we slowly increase the potential difference across the photoelectric cell as well. फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी ऐसे ही काम करता है, जिसके ऊपर आप इंसिडेंट लाइट मारोगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे व्हेन यू पास द करंट। इवेंचुअली एनोड भी एक पॉइंट पे इतना पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस लीव कर चुके हैं, उस एक पॉइंट आएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। वी कॉल इट द स्टॉपिंग वोल्टेज। उस वक्त आपको जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम है। गॉट इट? जी। So if you use a range of light frequency, we can also plot a graph for the stopping voltage as well. क्योंकि हमें पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ माइनस वाई फंक्शन, वर्क फंक्शन। और इक्वेशन ऑफ लाइन मैथ्स में क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वी कैन कंसिडर वाई एक्सेस टू बी काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सेस टू बी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपका जो ग्रेडियंट है वो आपको क्या बताएगा, ओनली एच। गॉट इट? क्योंकि ओके। हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ वुड गिव यू ओनली एच, तो वाई ओवर एक्स आपके पास एच के इक्वल ही बनता है। तो ये एक ग्राफ के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपके पास आ सकते हैं। इज इट क्लियर? जी। So photoelectrons are the electrons released from a metal surface as a result of its exposure to electromagnetic radiation, whereas the work function is the minimum energy required needed by an electron at the surface of a metal to escape from the metal. Threshold frequency is the minimum frequency of electromagnetic radiation that can cause the emission of photoelectrons from the metal. And stopping voltage क्या है? The minimum voltage needed to reduce the photoelectric current to zero when illuminated with a particular frequency of light. Let me show you a video regarding photoelectric effect, and then we are done for today. You're looking at one of the most revolutionary inventions of the 21st century, the selfie camera. Digital cameras small enough to be embedded in our phones have transformed photography and changed how we interact with the world and each other. But did you know that this sophisticated piece of modern technology has its roots in the science that won Einstein a Nobel Prize? Like most smartphones today, my iPhone camera uses a sensor called a complementary metal oxide semiconductor, or CMOS. It's similar to a CCD, or charge-coupled device, and works because of this one weird trick physicists discovered more than a century ago. It's called the photoelectric effect. In Einstein's time, light was thought of as a wave. It clearly has wave-like properties, diffraction, interference, and so on. But every once in a while, it seemed to behave in a very unwave-like fashion. Some experimenters found that if you shine a light on a metal surface in just the right way, instead of illuminating or warming it, a bit of the light would hit like a tiny cannonball, knocking an electron right out of the metal. This effect was first demonstrated in the 1800s, but at the time, no one could explain why this happened. If light were just a wave of energy, shining a light on the surface should either do nothing, or it should gradually transfer enough energy to push the electron around. Higher intensity light should of course dislodge more electrons. But the experiments with the light on the metal showed that it didn't matter how long the light was shining, or even how intense it was. All that mattered was its color. A light with a low frequency, like infrared or visible light, would do nothing. But if you gradually increase the frequency of the light into the ultraviolet at some threshold color, suddenly electrons would start pinging off the metal like they were shot with tiny light pellets. That's not how a wave is supposed to work.
Einstein's Nobel Prize came from explaining what's really happening here. Light isn't really a wave at all. Or rather, it's not just a wave. It's really made up of tiny particles called photons. Each photon is a little packet of energy, and the amount of energy in each photon is determined by the light's frequency, or color. A photon of visible light has too little energy to knock an electron out of the metal. Even if you shine a lot of visible light photons on the metal, each photon will just shift an electron to a higher energy level, after which it'll fall back down. Because the energy levels of electrons only exist in discrete steps, you need a photon of just the right energy to remove the electron completely. And for that, you need to dial up the light's frequency into the ultraviolet so each photon can pack enough of a punch. This, incidentally, is why sitting too long in direct sunlight can burn your skin, but spending all day under a desk lamp at home can't. The sunlight has UV photons in it, and each UV photon has so much energy that it can deliver its punch right into your skin cells and damage them. Visible light mostly just bounces off. It's also why you don't want to spend time around gamma rays, the highest energy part of the electromagnetic spectrum. So what does all this have to do with your cell phone camera? Both CCDs and CMOS sensors make use of the photoelectric effect to convert the light that hits the sensor into electricity for a pixel. They use materials called semiconductors, in which even low-frequency photons can boost the electrons, so all the light that hits the sensor can create an electrical current. Filters, lenses, and materials optimized for different light frequencies work together to record the color of the light. Once the image is recorded by the sensors, the signals can be re-encoded into an image for your screen. Einstein is perhaps the most famous scientist in history. He made amazing contributions to our understanding of the universe, space, time, gravity. But what he actually won his Nobel Prize for was light. And he was the first person to realize that light is actually made of tiny little packets or pieces of energy that we call photons today. And that was important because he solved a problem that has stumped every other scientist for about 60 years or so. And as a scientist, a physicist, what I find most interesting and coolest about that was that shows that it's not just matter, it's not just electrons that are quantum and quantized, it's light as well. And so energy, so everything at the most fundamental level, as far as you know in our universe, is quantum. You just can't get away from it. CCD technology is so amazing that in 2009 it actually produced its own Nobel Prize for the inventors of the first CCD sensor. These days, CCD and CMOS sensors are everywhere in digital imaging, including in giant telescopes like Hubble and JWST. Quantum mechanics, once an esoteric, math-filled flight of fancy, now plays a role everywhere we look. In the behavior of the tiniest particles, in how we see the night sky, and even in how we see ourselves. Maybe, someday, the obscure theories we physicists of today spend all our time scratching out on chalkboards will produce a breakthrough in our understanding of how light and particles work. Maybe it will change the way we see the world around us. Maybe we'll even carry it around with us in our pockets. Picture that. So is the photoelectric effect clear? जी Okay. आगे ये डिब्रॉयस वेवलेंथ आ जाएगा, ये तो नया टॉपिक है। ओके, इसको देख लेते हैं जल्दी से। सो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस हमने भी देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू वेव पार्टिकल डुअलिटी, इट कैन बिहेव एज अ वेव एज वेल एंड इट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल, क्योंकि डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कर रहा है। We have seen that the waves passing through a gap will produce a diffraction pattern with dark and bright fringes as the diffracted waves from each side of the gap superposed to produce the interference pattern. Electron भी diffract करते हैं from the same phenomena and they also behave as waves as well. For example, एक निकल क्रिस्टल से लें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम मारी जाएगी, एक डिटेक्टर ले and that as well कि वहाँ पे diffraction होगी. You don't need to remember कि वो किस तरह का पूरा process है, but what you should know that not only Davison and Gardner proved to experimentally that electrons can behave as wave, उनके results ने भी ये चीज उनको allow कर दी. For example, they calculate the distance between the atoms in the nickel crystal, which has given rise to advances in the study of atomic structures by using electron beam crystallography. वहां से हमने एक पढ़नी है de Broglie equation.
De Broglie equation कहता है a French prince called Lucas de Broglie suggested electrons could behave as waves and proposed an equation to calculate their wavelength as well. तो उसने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला बताया, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय देयर मोमेंटम, जो आपको याद रखना है फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन आए कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग एट 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, इसका क्या मतलब है? 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, क्या वेवलेंथ जीरो निकालो। पॉइंट वन मल्टीप्लाई करें। ठीक है, एच ओवर पी फॉर्मूला लिखो। एच आपको पता है क्या होता है, 6.63 इंटू 10⁻−34, डिवाइड करो आप उसको मोमेंटम से। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या होता है बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का? याद होना चाहिए, 9.11 इंटू 10⁻−31। ये आपको डाटा बुकलेट के अंदर भी दिया होगा एंड पे वैल्यूज में। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी, अब आपने क्या करना है, आपने 10% लेनी है स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कि ये 10% .1। ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकालते हैं? 10 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 100, या फिर डायरेक्टली क्या लिख दो, 0.1, 10/100। तो आपने सिर्फ 10% ऑफ दैट स्पीड लेनी है, यू विल कैलकुलेट योर वेव लेंथ। इसी तरह इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस भी टू स्टेट कर सकता है। इन 1965 रिचर्ड फेनमैन सजेस्टेड that electrons should also produce the two-slit interference pattern seen with light, as they can behave as waves as well. Recently, this has been shown to be the case, giving further evidence for the wave nature of electron के अगर वो two-slit electron interference कर रहे हैं, that can also see. Latest research ने भी दिखा दी कि scientists observed this interference pattern built up by the movement through the apparatus of individual electrons, that they are both behaving as individual particles as well and waves at the same time। मतलब एज पार्टिकल्स भी हैं और एज वेव भी हैं। वेव कैसे? क्योंकि इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और पार्टिकल्स कैसे कि कुछ उनके एरियाज आ रहे हैं हाई कंप्रेशन वाले भी, कुछ पार्टिकल एरिया आ रहे हैं रेयर फ्रैक्शन वाले भी, जहां डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स कम या ज्यादा भी है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इट्स यूज टू स्टडी ऑब्जेक्ट्स एट वेरी स्मॉल स्केल्स। बायोलॉजी में भी एक पहले ए लेवल के स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होती है, एक लाइट माइक्रोस्कोप होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपका रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन हैज रीच टू मेनी लेवल्स। देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट कैन मेक द इलेक्ट्रॉन बीम मच मोर यूजफुल फॉर माइक्रोस्कोपी, एंड द मेन एडवांटेज इज दैट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी कंट्रोल्ड by altering the voltage applied to accelerate the electrons, and in some instances this can mean the wavelength of electron is the beam that is 10 into 10⁻10 meter, which is the same size as the atom। इतने छोटे, तो वो ये चीज भी उसने साइंटिस्ट को प्रूव कर दी थी। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे फॉर योर टॉपिक नंबर 3D। 3D के हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, हमने 3D टॉपिक के 3 पार्ट्स आज कवर कर लिए।